Hi everyone, welcome back to the Top Percentile YouTube channel. I am Aditya Sridhar. I've scored a 99.99 percentile in the MBA CET and I'm an alumnus of JBIMS. Today on our channel, we have a very special guest, Varad Shah, who is part of the JBIMS batch of 2027 and was a TTV student. So, Varad, thank you so much for taking out time to tell us about your journey. Thank you for having me, Aditya. So, Varad, when the CET result came out, what was your reaction when you realized that JBIMS was going to be possible, and how did your parents feel? Actually, the reaction was disbelief because on that day when result came out, I was actually doing the documentation for another college for admission. So I was busy in that work only, and then during the afternoon, the result came out, and family's reaction was a bit emotional because that result was validation of my hard work of 2 years. Uh, I cleared JB in my second attempt. Amazing, amazing. It is obviously an amazing feeling for yourself and obviously for the family also. But थोड़ा पीछे जाते हैं. What was your journey to JBIMS like? Actually, I come from commerce background. I completed my BCom in 2023. After that, I attempted CAT. Along with that, I was doing a couple of internships. And after that, I started working as a tax associate in a local taxation firm. And after that, in 2025, I cleared CET. Actually, I was also preparing for a chartered accountancy course during my graduation. So I completed first level of CA. Okay, amazing, amazing. And as I had mentioned before, you were a TTB student. So, how was your experience with the top percentile and what did you like about TTP? The biggest thing that changed my approach and attitude towards CT is that mentorship that you guys provided, along with the how to strategize when you attempt any mock, and of course in the on D-Day that helped me a lot. Apart from that, I used to think that CET is a gamble, and so my attitude was like, so take a punt and let's see what score comes. So that attitude got changed due to the weekly mentorship sessions that you guys took. Thank you so much. तो इसीलिए हम लोग ये सब करते हैं. That's why we had started a top percentile to do something different and help students like you get into JBMS. And as you said कि CET बहुत लोगों को लगता है कि बहुत unpredictable है and बहुत random है. What were your challenges जब तुम prepare कर रहे थे over 2 years? एक्चुअली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में माय स्कोर वाज अराउंड 97% है, एंड तभी भी मैंने अच्छे से प्रेप की थी, मैनिफेस्टेशन वगैरह सब पूरा किया था, बट फिर भी नहीं निकला फॉर सम रीजन. एंड इन सेकेंड अटेम्प्ट आई हैव टेकन योर कोर्स एंड मॉक्स मॉक्स और मेंटरशिप सेशन एज आई मेंशन, उस सभी से मदद मिली और हो पाया जो भी. गॉट इट. तो अभी ऑलमोस्ट 70-75 डेज है सीटी के लिए. एट दिस टाइम व्हाट डिड वन ऐसे टिपिकल डे लुक लाइक इन योर प्रिपरेशन? मतलब कितना घंटा तुम पढ़ते थे? हाउ यू डिड यू allocate टाइम? हाउ डिड यू टेक ब्रेक्स? Actually, my preparation was along with my job. So ऐसा कुछ specific hours नहीं था कि इतना hours मैं इसको देता था उतना hours. But my daily ritual used to be doing calculations, maths का practice करता था. Along with that, vocabulary building. ये दोनों चीज मैं कभी भी नहीं छोड़ा. So that helped me a lot because as we all know, CET में कैलसी नहीं होता. So doing that maths practice helped me a lot. गॉट इट. उसके अलावा मतलब एवरी डे यूज टू डू स्पीड मैथ्स एंड वोकैबुलरी. उसके अलावा व्हाट, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी इन अ डे और इन अ वीक along with your job? Mostly in the beginning, I started with unconventional way. I didn't study the whole portion because that was my second attempt. I have Right. already studied it for CAT SAT exam. So what I did was I started immediately with mock. जैसा mocks होता था तो मैं more than mock
मतलब more than 2.5 hours I used to spend for mock analysis. I respected that, and उससे ही जो लर्निंग होते थे वो मैं करता गया. एंड in the beginning I attempted a mock on alternate day, but after that in the end I have attempted a couple of mocks in a one day as well. Got it, got it. And for aspirants watching now, as I said, 2.5 months के around है. What would you suggest to them? मतलब कैसे approach करना चाहिए, कितने mocks देने चाहिए? एज आई मेंशन मॉक्स का कुछ मतलब फिगर ऐसा फिक्स नहीं कि इतना ही दोगे तो उतना होगा. मैंने सेक्शनल पे कम मतलब सेक्शनल्स कम दिए, बट मैंने मॉक्स ज़्यादा दिए थे. एंड अनदर थिंग इज बैलेंसिंग ईच एंड एवरी सेक्शन वुड रियली हेल्प समवन लाइक मी, बिकॉज इवन दो आई एम गुड एट कॉन्ट्स, मैंने कभी वीआरसी को छोड़ा नहीं या मतलब उसको कम वेटेज दिया, ऐसा कुछ किया नहीं. हर एक को बैलेंस करता था. और इवन दो कॉन्ट में अच्छा था, फिर भी ऐसा नहीं कि मुझे इसमें 45+ ही चाहिए या 40+ ही चाहिए. अगर कॉन्ट उस दिन या उस मॉक को टफ आ रहा है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता था, और कॉन्ट छोड़ के बाकी के सब सेक्शन थे उसको अच्छा परफॉर्म करता था. सो दैट इज द समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड. बैलेंसिंग ईच एंड एवरी सेक्शन वुड रियली हेल्प. आई कम्प्लीटली अग्री. मतलब हम लोग भी ये बोलते रहते हैं कि स्पेशली इफ यू आर टारगेटिंग JBMS तो कोई भी सेक्शन कंप्लीटली छोड़ नहीं सकते. यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग दैट. एंड मतलब एक मिनिमम लेवल तो हर सेक्शन में होना ही चाहिए. उसके अलावा उसके बिना JBMS तो गेट्स आउट ऑफ रीच, बिकॉज कट ऑफ्स आर गोइंग हायर एंड हायर एवरी ईयर. तो डेफिनेटली आई थिंक दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यू gave CET twice and obviously बहुत peers के साथ you would be preparing. तो what mistakes you see जो commonly aspirants करते हैं during their CET preparation जिसकी वजह से उनका JBMS नहीं हो पाता है? I think they took this exam too much with stress. एंजाइटी लेवल उनकी ज़्यादा होती है. स्टेइंग काम इज द वन थिंग दैट आई वुड रिकमेंड. उससे आगे जाके लोग ये एक सेक्शन को कोई तो ज़्यादा वेटेज देते हैं एज आई मेंशन, सो उस चीज़ भी इन द एंड इम्पैक्ट करती है आपके स्कोर को. एंड along with that mock analysis is something that I would recommend again and again, because that helped me a lot to secure a spot in JBIMS. अगेन कंप्लीटली अग्री. आई थिंक प्रेपरेशन के टाइम पे स्ट्रेस ज्यादा लेना चाहिए बच्चों को. एंड दे शुड while preparing study hard and take the exam like a lot is depending on it. पर जब D-Day आता है then they should, and I know it's very difficult and बहुत मुश्किल होता है ये करना on the D-Day, but on the D-Day completely opposite होना चाहिए. ऐसे एग्जाम देना चाहिए कि इतना कुछ डिपेंडेंट नहीं है. इट इज जस्ट एन एग्जाम. इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वाइल वर्किंग हार्ड आई थिंक स्ट्रेस थोड़ा पुश करता है, बट ऑन द D-Day वो मेंटल प्रेशर की वजह से तुम्हारा परफॉर्मेंस हो सकता है इम्पैक्ट. ब्रेन फ्रीज हो जाता है, Yes, ब्लैकआउट हो सकते हो, कुछ भी फॉर्मूलाज कुछ भी कॉन्सेप्ट. तो ये प्रिपरेशन और D-Day के उसमें कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट होना चाहिए. exactly. And my final question, Bharat, for someone who is watching the video now, what is your last piece of advice for them to crack CET and get into JBMS? Don't compromise on VRC, first of all, because I have seen lot of students making this mistake. VRC बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, आई एक्सेप्ट दैट, बट छोड़ना मतलब आप आपके जेबी का स्पॉट छोड़ रहे हो. अनदर थिंग इज डूइंग इन डेप्थ मॉक एनालिसिस. आई हैव मेंटेन्ड एन एक्सेल शीट during my preparation that really helped me a lot. So maintaining Excel sheet would also help you to see your upward graph. And another thing that I would recommend is before attempting mock, sit in front of your PC and strategize how are you going to attempt that mock. And you can predict your score as well before attempting mock based on your preparation. And once you are done with your mock, then rather than jumping to check your score, you should first evaluate yourself, what you have decided and what you have done in that mock specifically. And you can also estimate the score that you might get as well. So that really helped me a lot to get my D-Day score, because उससे मेरा प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ गई थी कि मेरा स्कोर क्या आ रहा है. +or -5 हो रहा था,
and I have also estimated and close score. जो मेरा actual score था, raw score था. Wow. So doing this would really help. Amazing, amazing insights, Bharat. I'm sure कि whoever is watching this video is going to learn a lot कि एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है, 2.5 months को कैसे अप्रोच करना है, and they are going to get really motivated because you have spoken about your journey from 97 percentile to JBIMS in your second attempt. So thank you again so much for your time. This is going to help a lot of people. Yes, thank you for having me.